So in this chapter, the first verse, okay, I'll just read the first verse. Let's just read the first verse. Yeah. So the first verse translation, Kapila Uvacha, the personality of Godhead said, as a mass of as a mass of clouds does not know the powerful influence of the wind. A very beautiful analogy is being given over here. Like the mass of cloud doesn't know the powerful influence of the wind. Similarly, a person engaged in material consciousness does not know the powerful strength of the time factor by which he is being carried. Very powerful analogy. Try to understand, what is being said over here. That mass of clouds, see, a cloud itself is a miracle. Like a rain cloud. To look here, there, very far away to see miracles. Miracles are all around us. We're just surrounded by miracles. Inside our body, there are miracles going on all the time. Outside also miracles are inconceivable. We cannot even imagine the brilliance that has gone into this creation which we see on a day-to-day basis. जरा ध्यान लगा के देखो आपको दिखेगा सब जगह आपको चमत्कार ही चमत्कार दिखेगा. Even if you look from a scientific point of view also, what is a cloud? What is the rain cloud? Rain cloud is something that is formed because the sun evaporates the water from the ocean and carries it into the sky and it forms a cloud. Just imagine, water that is there on the earth is being picked up by the sun, is being created into a cloud, and that cloud is there in the sky. Just imagine, a cloud form हो गया और वो वहीं पे रहता है. I mean, goes against laws of gravity, right? Gravity भी कोई चीज है, मतलब sun है तो gravity नहीं है क्या? The water is going up. चलो ऊपर गया वहां पे cloud बन गया. That one cloud has got billions of liters of water. Billions. But that cloud, which is carrying this water in the sky, it is just pushed along by the wind. The wind pushes that cloud. अभी आप सोचो अगर कोई बलून है, होली के टाइम हम लोग people make balloons during होली. We make होली के टाइम balloons. तो होली के टाइम जो बलून बनता है अगर उसमें बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो क्या हो जाता है? वो फट जाता है. थोड़ा सा उंगली पे लगा फाच करके वो फट जाता है. Now this cloud, which has got billions of liters of water, is being pushed by the wind. If you imagine if it formed above the ocean and all the rain fell in the ocean only, there would be no rain for human beings. Human beings would all die of thirst. There would be no water. There would be no rivers. There would be no lakes because all the rain is happening in the ocean. It is because the wind is pushing those clouds, gently pushing those clouds. It comes into the land mass and it rains over there. So it itself is a miracle. Okay. So point being made is here that the mass of it's got of liters of water and there are hundreds of such clouds. They're all being pushed. However powerful they may be, those clouds may be, they're being pushed by the influence of the wind. They don't know it, but they're just being pushed. Right? They're being pushed into different parts of the country, different parts of the world. Everyone is receiving rainwater. They can't survive without rain. We cannot survive, no agriculture, no drinking. We can't survive for even 1 year without rains. We are so dependent. But we are so foolish, we don't even see these things. हमको दिखता भी नहीं है ये. What news of the airplanes are crossing this cloud without any. Yeah. Imagine it is cutting through. It is cutting through. You imagine a water balloon and anything cutting through it. What's going to happen? Right? पहला तो वो plane ही वो cloud के साथ नीचे आ जाएगा. 1 billion liters of water on a cloud. It's finished there only. Just these are day-to-day miracles. Every day we can see. Just open your eyes, you'll see miracles all around. So the same way as this cloud is pushed by the wind, the analogy is given that the materialistic person, he is being carried away like a cloud. Like a cloud is carried by the wind.
he is carried away by the influence of time. So time is a very, very powerful thing. You know, Krishna says, I am time. In the Gita, he says, I am time. Time is me, it's my energy. And if you look at it, you know, of course, in the purport, the first verse, purport, Srila Prabhupada gives. तो if we see, अगर हम लोग देखते हैं कि ये you know टाइम जो है in the भगवत गीता ऐसा लिखा गया है भगवत गीता. I'm switching little bit English Hindi because I understand some people need to speak here in Hindi. तो भगवत गीता में ऐसे लिखा गया है कि you know हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है. कृष्ण कहते हैं मैं समय हूँ, I am time, but we have a very fixed time on earth. अगर श्रील प्रभुपाद के पर्पट में देखा जाए, फर्स्ट वर्ष का पर्पट में श्रील प्रभुपाद सिंह चाणक्य जो है वो कहते हैं कि इवन विद अ मिलियन गोल्ड कॉइन्स, मतलब एक स्वर्ण कोटि भी, एक करोड़ गोल्ड कॉइन भी दे दो आप एक पल भी वापस नहीं मिल सकता. मतलब अभी क्या टाइम हुआ है? अभी टाइम हुआ है 6:54. अगर मैं कहूं कि यार यू नो आई एम विलिंग टू गिव मेरा पूरा जिंदगी भर का पूंजी, जितना मैंने पैसा कमाया है, ज्यादा है नहीं वैसे बट कोई बात नहीं, जितना भी है मैं सब देने को तैयार हूँ, बस मैं 6:53 ऑफर चला जाऊं. नहीं जा सकता. आप सबका जितना सेविंग्स है, सबका सबका पैसा मिला के भी मुझे वो एक मिनट भी वापस नहीं मिल सकता. दैट इज व्हाट चाणक्य पंडित सेइंग. सो दैट टाइम इज सो प्रेशियस. वी हैव अ लिमिटेड टाइम ऑन अर्थ. वी आर इन दिस ह्यूमन बॉडी. हमें ये यू नो मनुष्य शरीर जो मिला है ये भी सीमित है. ऐसा नहीं है कि अगला जन्म हमें मनुष्य का ही मिलेगा, कोई गारंटी है? नहीं है. अगले जन्म में पशु का शरीर मिल सकता है, वृक्ष का शरीर मिल सकता है. we may be born as a chameleon, we may be born as a cockroach. कोई गारंटी है किसी के पास? नहीं ना, I will be born a human being only. मैंने बहुत अच्छा काम किया है. किसको गारंटी? Who knows for sure? Nobody knows. Nobody knows what their next life is going to be, right? And you have a limited time. So Srila Prabhupada makes the point that जो समय है आपके पास, इस मनुष्य शरीर में जो आपके पास समय है उसे यूटिलाइज करो. यूज इट. पावर जो फैन में गड़बड़. हाँ, जो समय है अपने पास, use it to develop your Krishna consciousness, because we are all running after what? नाम कमाओ, एक स्ट्रेंथ बनाओ, ये करो वो करो, let me have followers, let me be famous. ये we are all running after these things. Every ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे इस रूम में भी कोई एक्सेप्शन है. सब उसी चीज के पीछे भाग रहे हैं. इतने पास समय इतना ही है, कम है, बहुत कम टाइम है. अगर आप देखो, आई एम नाउ 51 years old. Okay, in another 1 month, exactly 1 month from today, I will be 52. 52. मेरा हाथ का लकीर कोई देखेगा तो बोलेगा तू अभी तक जिंदा कैसे है? तो वेरी शॉर्ट लाइफ लाइन. लाइफ लाइन देखेंगे, ये तो कुछ 25-30 का लाइफ लाइन ही है. इतना शॉर्ट लाइफ लाइन. जिंदा है, बोनस चल रहा है मेरा. जब तक चल रहा है चल रहा है. But I don't know how many years I have left. I don't know. Maybe it is 5 years, maybe it is 20 years, maybe it is 10 years. God knows. No one knows. किसी को भी ये रूम में मालूम है कि नहीं? मुझे पता है, मेरे पास इतना टाइम है. किसी को पता है? No one knows how much time we have. So what time you have left, would you rather use it on an activity? Would you rather use it on an activity which is, you know, which is eternally to your credit, or on an activity which is anyway going to be taken away? जैसे कि अगर आपको कोई बताए कि आप एक काम करो, आपका यू नो दोज आर वर्किंग, कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ने आपको आके बोला कि आप प्लीज ये यू नो सब स्टूडेंट्स राइट, द स्टूडेंट इज टोल्ड दैट यू नो यू प्लीज स्टडी दीस 3 chapters. यू नो ये एग्जाम में आने वाला नहीं है.
लेकिन आप ये 3 चैप्टर पढ़ो, तो आप पढ़ेंगे क्या? नहीं नहीं, पढ़ना चाहिए, 3 चैप्टर ही है, ज्यादा नहीं है, 3 चैप्टर पढ़ो ना। आई अवॉइड, एग्जाम में नहीं आ रहा है ना, नहीं एग्जाम में बिल्कुल नहीं आ रहा है। सेम वे अगर आपको कोई बोले कि आप ये 3 प्रोजेक्ट पे काम करो, लेकिन ये आपके नेक्स्ट ईयर के प्रमोशन में इसको कंसीडर नहीं किया जाए, मैं क्यों करूं? मैं करो, शुड डू, so we will not, because we know that अरे इससे को कोई फायदा होने वाला नहीं है, but still we are working so hard to accumulate money, to accumulate fame, to accumulate position, to accumulate so many things which we know for sure are going to be taken away by the influence of time. ये हमको गारंटी मालूम है कि अगले जन्म में आप कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी डिग्री कमा लो, कितना भी यश कमा लो, जो चाहे कमा लो, अगले जन्म में वापस लेके जा सकते हो क्या? Can you take? Nothing you can do. However much you may struggle. आपने ये जन्म में कोई है इधर जो पीएचडी किया है? नहीं, पीएचडी कोई है? कोई नहीं है, चलो अच्छी बात है। तो मैं बोल सकता हूँ बिकॉज जिसने पीएचडी किया हुआ है, पीएचडी, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, भयंकर मेहनत करना पड़ता है पीएचडी लेने के लिए। अभी जिसने पीएचडी कर रखा है, कोई कोई पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरल भी करते हैं, बहुत एंथुसियास्ट है जिनको पढ़ाई का, वो पीएचडी के बाद भी पढ़ाई करते हैं। But no matter how hard you have studied and how many degrees you have got, you are born in your next life, if at all you are born as a human being, if at all, in next life, you can't tell your nursery teacher, टीचर मैं पीएचडी है, फिर एक चुपचाप एबीसी पढ़, वापस एबीसी से शुरू करना पड़ता है, to start from scratch. You can't say I was millionaire and lost my money, पूरा जिंदगी मेहनत की और 7 करोड़ 8 करोड़ रुपया कमाए, मिलियनर बन गया, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट लाइफ में भी born in a beggar's house, खाने के वांदे हैं। तो इतनी मेहनत, so much hard work to obtain something which is anyway going to be taken away by influence of time, and you will not even have any access to it in your next lifetime, but still सिलेबस में है नहीं, पेपर में आने वाला है नहीं, प्रमोशन मिलेगा नहीं, लेकिन गधे के जैसे वही करते जा रहे। So this is what is called Maya, illusion. What are the 6 anarthas? What are the 6 anarthas? Lust, anger, greed, envy, pride and illusion. Illusion क्या है? यही है illusion. This is illusion. Okay, so we'll discuss a little bit more. So people are, Prabhupada makes a powerful point. He says that we have fixed and limited time on earth, and we should use that time to perfect our Krishna consciousness. Those who are not practicing the path of Krishna consciousness, are not practicing bhakti, like the cloud is taken away by the wind, death, time in the form of death will just carry us away, and we have no choice. जहां लेके जाएगा वहां जाना पड़ेगा, अपने पास कोई choice. Well, if you are not, see, we have a choice. We have a choice in one sense. Shall I surrender to Krishna, Supreme Lord, or shall I surrender to Maya, material nature? Material nature means material nature के चक्कर में आप घूमते रहोगे. कृष्णा के वो surrender करेंगे तो we can get out of this material nature. It's our choice, but we choose, even after coming to Krishna consciousness, if we choose to remain out of the circle of Krishna consciousness, है वो है उसमें लेकिन नहीं, then what happens? This is what happens. So people are acquiring so much, इतना मेहनत करते हैं हम लोग, so much pain we endure, you know, to acquire things. किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हम लोग कितनी मेहनत करते हैं? How much? Think about it. बचपन से आपने कितना मेहनत किया हो, कोई डिग्री पाने के लिए, कोई अच्छा जॉब पाने के लिए, फिर कोई इंक्रीमेंट पाने के लिए,
फिर कोई प्रमोशन पाने के लिए, फिर अच्छी पत्नी पाने के लिए, अच्छा पति पाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। आजकल बच्चे भी नेचुरली आते नहीं है। इट्स बिकम अ बिग चैलेंज टू हैव चिल्ड्रन टुडेस डे एंड एज, you know, because of the stressful lifestyle that people have. When they try to have a child, सालों साल निकल जाते हैं, बच्चे ही नहीं पैदा होते। This is happening, this is naturally happening. First of all, they have children very late, 30-35 के बाद ही बच्चे पैदा करते हैं कि पहला करियर बनाओ, बाद में बच्चे देखेंगे। And by the time they think of having children, they can't have children, बच्चे ही नहीं होते। This is the nature of the world. But still, so much मेहनत, सब चीज में इतना मेहनत, but everything is destroyed by time. Whether or not you are attached, you say, I am not attached. जो आया ऊपर वाले की, I am okay, I am not attached. But whether you are attached or not attached, whatever you have is going to be destroyed by influence of time. You know, and because of that, people start lamenting. You know, Prabhupada gives the example that there are so many empires in this world. The influence of time, time is so powerful. We say time is all powerful. Why we say this? थोड़ा इसके बारे में एक मिनट डिस्कस करते हैं. That why we say time is all powerful? Because time is able to destroy anybody. कोई भी सामने आने दो, time के सामने नहीं दिखता हो. Big empires were built with so much effort. कितना मेहनत. Greek Empire, 327 BC. हाँ, कितना मेहनत किया. कहाँ ग्रीस से चालू किया, लड़ते 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 मैसेडोनिया, ये वो मारा मारी, मिडिल ईस्ट से मार कूट करके 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 इतने लोगों को मार के, इतना मेहनत करके, सब जगह करते 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 ही केम टू इंडिया. And in India, he was bitten by a mosquito and he died of malaria. That's what people say. I'm not very sure. But whatever. Where is the Greek Empire today? इतना मेहनत किया Greek Empire बनाने के लिए. Where is it today? Greece is a failed country today. मतलब it is in so much debt today. इतना बोझ है उसका, क्या बोलते हैं, लोन्स का इतना बोझ है कि वो कंट्री कभी भी वो कंट्री बिक सकता है. इतना हाल है उनका. Where is the Greek Empire? Where is the Roman Empire? There was a Roman Empire, which is also so powerful. You know, for hundreds of years, the Romans, you know, ruled the world. Where are they? Gone. Egyptian, gone. Mayan Empire, Aztec Empire, Mauryan in India, Maurya Empire. They controlled whole of India. The Cholas controlled whole of India. वो था किधर? Gone. There is not a sign. Mughals, so super powerful. आज खाली औरंगजेब रोड है. There is no Aurangzeb. There is no Mughals left. All gone. अकबर रोड है, but अकबर नहीं है. All gone. मराठास, ये नहीं है तो मराठास. कोई बोला जय शिवाजी. हाँ, तो शिवाजी महाराज also, what an empire he created. It started from nothing. कुछ नहीं था उनके पास. एक किला जीत के, you know, guerrilla tactics, ये वो सही करके, their influence with their push the Mughals out. Mughals को बाहर निकाल दिया, पूरा इंडिया up to Bengal they spread. That kind of influence they had. Maratha Empire, 100 years gone. Maratha Empire doesn't exist. British Empire, the sun never sets on the British Empire. Why? Because all over the world, wherever you go, British Empire, chal so powerful. Where is the British Empire today? Where is Britain today? What's सोचता Britain के बारे में अभी? Who cares about Britain? Useless. Nobody cares about that country anymore. It's not even part of European Union. So time is so powerful. Those who are working so hard to build this empire, you may say, I am working hard to build empire. नहीं कर रहे. आप अपना खुद का एम्पायर बिल्ड कर रहे हो ना, कर रहे हो कि नहीं? मेरा घर जो है 1 BHK, उसको एक्सपेंड करके 2 BHK बनाने का है. 2 BHK का एम्पायर स्प्रेड करके 3 BHK करना है. मेरे पास अभी फैमिली में खाली 3 जन है, मैं, मेरी वाइफ और मेरे पिताजी.
कि उसमें एम्पायर एक्सपैंड करना है, एक एक लड़की आए तो अच्छा है, एक लड़का आए तो अच्छा है, 5 जन हो गए, अच्छा 5 जन हो गए, अभी थोड़ा प्रोस्पेरिटी भी आ गया, एक फुल टाइम सर्वेंट भी ऐड कर दो। हम लोग भी तो अपना एम्पायर बढ़ा रहे हैं, वी आर आल्सो डूइंग, वी आर वर्किंग सो हार्ड टू एक्सपैंड आवर एम्पायर, बट वी डोंट नो that this span of life, see, like the British Empire lasted in India for 200 years. 200 years is a very long time, eh? 200 years. Mughals for some years, 600, 600 साल तक मुगलों ने इंडिया पे राज किया, but 600 साल is nothing if you look at it in context of time as given in the Shrimad Bhagavatam. 600 साल कुछ नहीं है, ऐसे निकल जाता है, ऐसे nothing. It's like a flash in the eternal journey of the soul. So, you see over here, I live in Siddhi society. Anyone else who lives in Siddhi society? Okay. So Sindhi society में when I came there for first time in 2000 in 1999. Okay, I have been living in Sindhi society for now 25 years. आधा सिद्धि हो गया हूँ कोई चक्कर में. But yeah, in 1999 when I came, there were very few buildings. There were only bungalows. Because all the settlers who came during partition time, they were given plots. Because they were resettled over here, they were given plots, and those plots they built bungalows. Those bungalows, you can imagine, वो बंगले बनाने में उनका कितना एफर्ट गया है, कितना उन्होंने चाव से वो बंगलो बनाए रहे, कितने प्रेम से बनाए रहे. आप सोच सकते हो, to build a bungalow is not an easy thing. कितना मेहनत है उसको. See, when you buy a flat ना, आपको समझ में नहीं आता है, बट जब खुद बंगला बनाते हैं, कुछ बंगला छोड़ो, एक छोटा सा कुटिया भी बना के देखो, जान निकल जाती है. सो टफ. सीमेंट खुद खरीदो, स्टील खुद खरीदो, पेंट खुद खरीदो, डिजाइन खुद बनाओ, सब कुछ खुद करो, कितना टफ है. कितना पैशन, कितना टाइम, कितना पैसा उसमें गया रहेगा वो बंगला बनाने में. उन्होंने सोचा मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन विल एंजॉय दिस बंगलो, ऐसा सोच के बनाया होगा, है कि नहीं. So while dying also they must have thought that this bungalow will be there. बंगले का सोच के मरे रहेंगे. लेकिन today all those bungalows are gone. सब बंगला तोड़ के influence of time those bungalows have become like good bungalows. Many of those bungalows look like good bungalows. मतलब कोई रहता नहीं है अभी उधर, सब कांच टूटे हुए हैं, बिल्डिंग पूरा ऐसा ramshackle. तो बिल्डर्स ऐसा गिद्ध के जैसे उसके ऐसे गोल घूमते सब बिल्डर लोग. Like a kite, it flies in the sky, it circles around its prey, comes like this and लेके चला जाता है. वैसे ही builders are circling around these bungalows. रीडेवलपमेंट करो, पैसा मिलेगा, रीडेवलपमेंट करो. Influence of time, जिसने बहुत मेहनत से, बड़े चाव से, बड़े पैशन से बनाया होगा. This is what time does to everybody. Doesn't spare anyone. कोई भी फिल्म स्टार हो, कोई भी फिल्म स्टार हो, शाहरुख खान हो या माधुरी दीक्षित हो, कोई भी हो, सुंदर, कितने भी charismatic, influence of time, they start to, skin starts sagging, hair starts becoming white, पहला जब बाल सफेद होता है ना, तो it's quite a traumatic experience. मेरा पहला बाल सफेद हुआ था when I was 29 नहीं 31, सॉरी 31, 7-8 years हुआ था मेरा. तो एक कस्टमर था, वो कस्टमर के पीछे 6 महीने में भागा, वो कस्टमर की बदौलत मेरा पहला बाल सफेद हुआ. मैं उसको जाके बोला भी, तेरी वजह से मेरा पहला बाल सफेद हुआ. But when that hair became white, it is quite a sobering thought. You realize कि oh my God, I'm just 31, 32, and what is this happening? Like once one Brahmaji was saying that when you are still like 30s में हो, आपको लगता है कि I'm still like looking good looking, and you have some pride about yourself. And आप गाड़ी में जाते हो, you see someone from opposite sex, and you see them looking at you. For a second, you see them looking at you. तब तक क्या लगता है
इमीडिएटली ना आपको ऐसा कार के मिरर में बार बार दिक्कत है, सब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। वी आर सो कंडीशन, वी आर सो कंडीशन, मोमेंट वी सी समथिंग लाइक दिस वी फील कि आई एम वेरी गुड लुकिंग, मैं तो बहुत अच्छा है, सब मेरे को देख रहे हैं, राइट? एंड देन आफ्टर सम टाइम you see that they're not really looking at you. मतलब पहले रिक्शा कोई पास में से निकल जाता था, एटलीस्ट वैसा ग्लांस करके निकल, अभी तो मुझे दिखता भी नहीं है यार, our ego start getting hurt. It's of time. Time takes away everything, your beauty, your wealth, your knowledge. We're so proud of our knowledge. मुझे आता है क्या, भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक आते हैं मेरे को। There will come a point when you try to say the verse, वर्स ही नहीं आता है मुंह में, नहीं आता है। उसके दो वर्ड आएंगे, बाकी का नहीं आएगा। उसका चौथा लाइन आएगा वर्स का, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद ही नहीं आ रहा है। इसमें व्हाट्स द पर्सन, व्हाट्स द पर्सन, व्हाट्स द पर्सन, लाइक वी विल अशेम टू एडमिट कि मैं भूल गया, मेरे को मालूम ही नहीं है, कंप्लीटली भूल गया। लाइक नो, हां आई रिमेंबर दिस, फर्स्ट टाइम बता दो। Your knowledge is taken away by time. Your wealth is taken away by time. Your beauty is taken away by time. Your strength. You know, when you are in college, लोग का बहुत एक गुरूर रहता है कि 17 इंच का बाइसेप्स है, जिम में बनाया असली घी खाके। हाँ, we feel so proud of our physical strength. All gone with the influence of time. Yes, when Krishna left, Arjuna lost. He lost to, cowherd boys. So this is the influence of time. Time comes, it's just, खींच लेता है वो. So Kapil Dev, Prabhupada says, he's speaking such strong words to Mother Devuti. ये मतलब ये काफी लाफा मार रहे हैं ना वो, ऐसे प्रेम से लाफा मार रहे हैं वो. So he speaks such strong words to Mother Devuti because those who are materially attached, he has spoken about bhakti, pure bhakti, ये सब बात हो गया है. Those who are materially attached, they are not able to develop attraction for the lotus feet of Krishna. Those who are very attached to their family, to their body, to their degrees, to their bank balance, to their position in society, जिनको ये सब चीजों में बहुत attraction होता है ना, कृष्ण का attraction नहीं मिलता, doesn't happen. So therefore, Kapil Dev is giving these hard-hitting, heavy verses over here. Then another एक और लाफा मारते बड़े प्रेम से. See, this is Supreme Lord speaking. You have to understand these words are important. Whatever Lord Kapil Dev is speaking, Supreme Lord is speaking. So ये हमारे लिए एकदम मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें अपने जीवन में लगाना चाहिए. थोड़ा हैवी है, थोड़ा कान लाल लाल हो जाएगा सुन के, but it is worth it. We should hear. So in the next verse, he says, what a powerful verse. Listen to the words. वो कहते हैं, the living entity in whatever species of life he appears, whatever species of life he appears, he finds a particular type of satisfaction in that species and is never averse to being situated in such a condition. इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो जीव होता है, लिविंग एंटिटी, आत्मा, वो जिस भी शरीर में उसको प्रवेश मिलता है, जो भी शरीर, उसे उस शरीर में एक तरह का अजीब संतोष मिलता है. वो कोई भी शरीर हो, उसको उस शरीर में, उस स्पीशीज में उसको एक अजीब तरह का संतोष मिलता है, और वो उस सिचुएशन में रहने से उसे कोई आपत्ति नहीं आती. इज नॉट एवर्स टू बीइंग इन दैट सिचुएशन, राइट? सो दिस satisfaction of the living entity in a particular type of body, however abominable it is, मतलब कितना भी खराब शरीर क्यों ना हो, उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है उस शरीर में रहने से. इसी को कहते हैं मोह माया, इल्यूजन. जो हम लोग बोलते हैं ना, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड एंड इल्यूजन. You always wonder what is this illusion? ये छठा आता तो illusion का से, बाकी सब तो समझ गए ये है illusion. This is illusion. So Prabhupada gives an example. This is a man who is in a higher position. जो भी व्यक्ति समझो
HPCL में, BPCL में, जहां पे भी काम करता है, सीनियर जनरल मैनेजर, वो जब एक इंटर इंजीनियरिंग, जीटी बोलते हैं ना, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, जीटी, हाँ, गेट नहीं, गेट अलग है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, जो खाली इंजीनियरिंग करके एकदम फ्रेश, फ्रेश आया है, कुछ आता नहीं है उसको, उसको किस तरह का क्वार्टर दिया जाता है, एकदम मतलब थका हुआ है, वेरी सैड लुकिंग क्वार्टर्स आर गिवन टू अ जीडी, राइट? नाउ यू टेल द, यू नो, द डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आप जाके उस क्वार्टर में रहो, वो रहेगा क्या? क्या लगता है? अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बोलेंगे आप बस जस्ट आपका घर का रिपेयर हो रहा है, 2 महीने के लिए आप एक जीटी के घर में वो वाले क्वार्टर्स में रहो, उसके बाद यू कैन कम बैक हियर, वेरी गुड। क्यों भाई, वो भी घर ही है, रहने के लिए क्या चाहिए? एक बेड चाहिए, किचन चाहिए, एक टॉयलेट चाहिए, क्या चाहिए? यू नीड अ टॉयलेट, यू नीड अ बेड, you need a kitchen. That's it. That's all you need to stay alive. But no, he will not accept it, right? So, Gopal as a man in a higher position, they feel dissatisfaction with the standard of life of a lower grade person. उसको वो संतोष नहीं मिलता, ये कैसा जीते हैं, how they live, you know, like that, वो फ्रांस का था ना, फ्रांस का एग्जाम्पल, that the queen of France, क्या नाम था उसका? Marie Antoinette. So when there was a French Revolution going on, you know, so someone said that they're starving. They're starving. The French people are starving. We need to give them, you know, they're not getting bread. They're not getting their daily bread. You know what she said? Why are they having bread? Let them have cake. लोग ऐसे मतलब insult to injury ऐसा. They are starving. They can't get their daily bread. She said, why are they eating bread? Let them eat cake. उसको वो कंसेप्ट ही मालूम नहीं है, ब्रेड मतलब एक रोज का खाना मिल रहा है भाई, निवाला नहीं मिल रहा है खाने को, कंसेप्ट ही नहीं मालूम है वो. So person who's got a very high level of living, they can't identify ये लोग कैसे जीते हैं बेचारे, how they live यार, they cannot even identify, right? But the person who's living in that situation, गरीब के घर में रह रहा है, रोज मारपीट, एक आज का अगला मील कहां से आने वाला है उसको मालूम नहीं है, but still he finds a particular kind of satisfaction in that life also because of the spell of माया. ये माया के वजह से व्यक्ति कितना भी दीन दुखी क्यों ना हो, वो फिर भी उसमें कोई संतोष ही लेता है. आपने कॉकरोच तो देखा है, and this is not only human, any species of life. कॉकरोच आपने देखा है, everyone has seen cockroach. Who finds cockroach beautiful? कोई है जो यहाँ पे माइका लाल जो बोलते हैं कि कॉकरोच बहुत सुंदर होता है, किसी को लग रहा है? Any of the Mataji's find cockroach beautiful? No. Cockroach is very disgusting. Yuck. देख देख के कुछ तो होता है जो कॉकरोच को. But there is someone who finds the cockroach very beautiful. Who is that? हाँ? नहीं, वो छोड़ो, अलग species of life है, we will not go there. But there is someone who finds the cockroach that you find so ugly, repulsive, and somebody who finds that cockroach very beautiful. Who is that? Huh? Another cockroach. The male cockroach sees the female cockroaches. Look at her eyes. Look at her antennas. कैसे ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, antenna? Antenna कैसे ऐसे 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 उठता है ना? डर लगती है वो. उसके विंग्स ऐसे उड़ते हैं ना, तो एकदम जैसे लगता है कि हवाएं उसके विंग्स के साथ म्यूजिक बजा रहे. वाह वाह वाह. He is composing poetry when he sees that cockroach. He is attracted because he is in that cockroach body. In a male cockroach body, he is attracted by the female cockroach, and the female cockroach is attracted by him. देखो क्या, कैसे कचरे के ढेर में जाके वहां पे 1.5 घंटा रह के कैसे वो खा पी के एकदम मस्त होके आया. देखो कितना सुंदर कॉकरोच है.
They are very attractive. But do we find that attractive? We find it repulsive, right? But the cockroach finds it very attractive. There's one more thing, one more person who finds cockroach very attractive. The frogs. The frogs, the rats, the birds, they find cockroaches very attractive because cockroach is food for them. Huh? Lizards also. Spiders also. Spiders also, they catch cockroaches in their web and they eat them. जो आपको repulsive लगता है वो किसी का खाना है. So how do we understand this? This is what is Maya. This is Maya. You may not find a lizard attractive. The female lizard finds very attractive. You may not find a tiger may not seem attractive to you. Tiger तो lizard cockroach छोड़ दो. टाइगर के ऊपर एक पोएम था बचपन में सुना था. टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट कुछ था ना एक दैट फियरफुल सिमेट्री ऐसा कुछ तो पोएम था स्कूल में. टाइगर देखने में सुंदर होता है ना, है कि नहीं? इज अ टाइगर गुड टू सी और नो? ब्यूटीफुल और नो? Swan is beautiful or no? Are you attracted to the swan? Are you attracted to the tiger? You may be attracted, but you will not think that this should be my husband. यार इतना सुंदर है, देखो उसका ऐसा वो हार्ट शेप में उसका नेक है, इतना सुंदर है, ये मेरा पति है, इसी के साथ मैं शादी करूंगी, ऐसा कोई सोचता है? नहीं. This is Maya that controls us. It's called Avaranatmika Shakti. It covers our intelligence. Whichever species of life you are in, accordingly वैसा ही पर्दा बैठता है अपने आंखों के ऊपर और हमको वही चीज सुंदर लगता है. ये होता है माया. Prabhupada says that in the lower species of life, lower grade or lower species of life, the development of consciousness is so poor that one cannot understand whether he is happy or distressed. उसको ये भी नहीं पता चलता कि मैं खुश हूं कि मैं दुखी हूं. हाँ, यही है अवरनात्मिका. It's you're covered like the pig. What does the pig eat? Stool, right? I mean, अभी objectively देखो, ये कैसे कोई stool खा के खुश हो सकता है? That pig is enjoying it. He's enjoying it. उसको तो बस वो अपना tail back करते करते खा रहा है. कुत्ते लोग को कुछ खिलाया तो अपना ऐसा पूंछ हिलाता है ना, he's so happy, he's excitedly wagging his tail. A pig is wagging its tail when it is eating. What kind of covering is there of Maya? It's crazy. There is this in the fifth verse, Prabhupada gives a very powerful quote. I'll just go there 1 minute. Okay? Yeah. So Prabhupada says, that once Indra, the king of the demigods. See, who are demigods? We have discussed, I think last time also, I think we touched on who are demigods, how powerful they are, and who is Indra. Amongst the demigods, is the king of demigods. Itna powerful hai. But only kuch galti kiya, and he was cursed that he will become a pig. He was cursed to become a pig. And as a pig, he came to this Dharatal, from heavenly planet where there is heavenly enjoyment, unlimited. मतलब यहाँ का enjoyment देख के, it is described that if you take the most beautiful person in this earth planet, so beautiful, he looks like a frog compared to the apsaras of heavenly planets. They are so beautiful. मतलब ऐसा बताया जाता है कि किसी ने अगर अप्सरा का दर्शन कर लिया, सामने अप्सरा आ गई, वो बेहोश हो जाए. He will fall unconscious because these eyes are not meant for that kind of beauty. तो देख के आदमी बेहोश होता है और देख भी नहीं पाए, cannot even contain that beauty. Such much beautiful the Apsaras. So Indra is the king of all the demigods and Apsaras are just there. वहाँ पे मतलब ये है इंद्र का पोजीशन. पर उनको क्या कर्ज किया कि आप धरातल पे जाओ और आप सुर बनो.
become a pig. When he became a pig, he got married to a female pig. Married means married, but he had a female pig. From that female pig, he had many piglets. बहुत सारे बच्चे पैदा किए उन्होंने. And थोड़े समय के बाद वो जो श्राप दिया था, वो श्राप की अवधि खत्म हो गई थी. तो ब्रह्मा जी आए कि भाई इंद्र जी, अभी हो गया, आपका श्राप खत्म हो गया, आप वापस आओ. वापस आओ मतलब आप इंद्र हो, इंद्र, इंद्र, you please come back. You know what he said? What is Indra? I am not interested. I have such a nice family. मेरी wife देखो कितनी सुंदर है. यार ये कोई अप्सरा से कम है. देखो कितनी सुंदर है ये. She's so beautiful. Look at my children. They look like. They look so. So this is what happened with Indra. That he was so attached, he was unwilling to leave that body of a pig to go back to heavenly planets. So in this fifth verse, he's saying the conditioned living entity is satisfied in his particular species of life while deluded by the covering influence of the illusory energy. He feels little inclined to cast off his body. ये शरीर में छोड़ना ही नहीं चाहता. कितना भी सफरिंग क्यों ना हो, मुझे ये शरीर नहीं छोड़. Because यहाँ पे एंजॉयमेंट भी होता है. पता अगले लाइफ में क्या मिलेगा. यहाँ जो अपने कंट्रोल में इसी के साथ एंजॉय करते. This is what is our consciousness. We're completely in Maya. 100%, 100%. Okay, he is not inclined to leave this body even when in hell, for he takes delight in hellish enjoyment. So again, Prabhupada says, look at this purport, it's very powerful. He says, this is the spell of Maya. Even Indra forgets his heavenly standard of life and is satisfied with the standard of a horse life. Okay. He says, by the influence of Maya, the conditioned soul becomes so affectionate towards this particular type of body that if he is offered, give up this body and immediately you will have a king's body. Give up this body, you'll have a king's body. He will not agree. This attachment strongly affects all conditioned living entities. Lord Krishna is personally canvassing. कृष्ण भगवान जो है भगवत गीता में खुद आके कह रहे हैं that छोड़ो ये सब, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुना. Just listen to my pastimes and just accept that this is transcendental. But that's it. वो ज्यादा सोचना नहीं है. Just accept that my birth and activities are transcendental. You will come back to me. इतना मतलब डिस्काउंट दे रखा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? We are not agreeable. We think we are quite all right. Why should we surrender to Krishna and go back to his kingdom? इसी को कहते हैं illusion or Maya. Everyone is satisfied with his standard of living, no matter how abominable, how horrible it may be. They are still satisfied. यही अच्छा. No, like that. So, there is this story one brahmachari told, and it's a very heavy story, but सुनो इसको जरा एक बार, बताना जरूरी है. That there was a living entity, human being, who was destined to be born as a pig in his next life. He was destined to be born as a pig in his next life. Okay, but before that he had to go to hellish planet. Hellish planet में उस इतने पाप किए थे कि उसको पहले वो सफर करके फिर उसको. So ऐसे बताया जाता है शास्त्रों में कि when you go to hellish planet, वहां पे आपको तैयार किया जाता है for the next body. जो अगला शरीर मिलने वाला है उसके लिए आपको क्या बोलते हैं, नेट प्रैक्टिस कराया जाता है. You are made ready for the next body in that hellish planet. So this person, because he was going to get a pig's body, he was made to eat stool. In his subtle body, what he had, he was made to eat stool every day. Every day he was eating stool. And one day he said, yesterday का stool जो दिया था वो fresh था, आज का थोड़ा dried up है. क्या है ये? कल का अच्छा fresh wet stool था, ये तो dry है. The moment he said that, Yamduta said, he is ready now. अभी भेजो उसको.
पिग बॉडी में. So this is our situation. That even if we may be suffering, see, this is very stark. ये बहुत heavy है ये example. लेकिन सर समझ सकते हैं कि हम लोग का जो स्टैंडर्ड ऑफ एंजॉयमेंट है, हम लोग उससे इतने अटैच हो जाते हैं, इवन विद आवर सफरिंग बॉडी, with our suffering mind, all kinds of difficulty that we have in our life, still we feel कि यार उससे तो अच्छा है ना, मेरा लाइफ अच्छा है. So now you will think that यार ये तो भगवान कितने, I mean, how cruel he is यार, ये क्या है, ये किस तरह का पनिशमेंट है, भगवान कितने क्रूएल है, ऐसा कोई सोच सकता है? सोच सकता है कि नहीं? कोई सोचेगा ये क्या है, कैसे भगवान है यार, ये इसको किसको फुल खिलवा रहे हैं, हाँ भाई. तो although it may seem to be a punishment, may seem to be a punishment, and putting someone into this much illusion that they are willing to eat stool also may seem like a punishment. Prabhupada says this Maya also means God's grace. If someone does not want the topmost spiritual life, मुझे नहीं चाहिए कोई कृष्ण भगवान वगैरह, मुझे कोई डिप्रेशन, मुझे इसी धरातल पे रह के I want to enjoy over here. But your standard of karma is so bad that you are destined to be born as a pig. You are destined to be born as an insect जो 1000 बार कुचला जाएगा. ये तुम्हारा कर्मा है. तो तुम्हारी इच्छा से तुमने जो कर्म किया उसका तो तुमको भुगतान करना ही पड़ेगा. So if you desire to cultivate ignorance, then you are put under the agency of Maya, so that you can try for happiness in the material world. यहाँ रहते हुए भी, एक सुअर के शरीर में रहते हुए भी, स्टूल खाते हुए भी, वो पिग जो है एंजॉय करता है. He enjoys like anything. This is Maya. We should understand that same Maya is working on you and me. We are not in pig's body. We are in body of Siddhartha Sagadi, Pitama Sakadas. I am feeling very proud of who I am and what position I am. I am also in Maya only. The moment you become proud, you are in Maya. You are thinking you are something great. So we should understand that this Maya is so powerful. The influence of time we discussed, the influence of Maya we discussed. So this is what is this material world, and in the subsequent part of this chapter, it will be discussed that what happens to a person who is attached like this to the body. क्या होता है आगे अभी हम लोग सुनेंगे अगले किस्त में. Next time when we meet, we'll continue this discussion on what happens to the conditioned soul who thinks that I am this body and is trying to enjoy with whatever facilities are given in this body. He or she is trying to enjoy in that body. What happens to such a person? How they suffer? We will discuss next time. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki. Any questions or comments? Anyone would like to add anything? Okay. Like to add any comments? ऐसा कोई है जो इन्फ्लुएंस और टाइम से बच सकता है? एक्चुअली अगर हम ये जान लें कि हम ये शरीर ही नहीं है, हम आत्मा है जो शाश्वत. Soul is eternal. Soul is not influenced by time. नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः. So that soul is not, cannot be cut by a sword, cannot be burnt by fire, cannot be influenced by Marutha, by wind. कोई influence नहीं कर सकता उस soul को. Soul eternal है. If we realize that I am not this body and I am this soul residing in this temporary body, due to my karma, due to my desires, I have received this body. If we realize that, time has lost its influence. Maya has lost its influence. माया ने पकड़ के रखा है.
बट एक्चुअली माया ने हमको पकड़ा नहीं, हमने माया को पकड़ के रखा. There is this story that Janak Maharaj, the father of Sita, Janak Maharaj, is one of the Mahajans, a great person. So once when he was in his courthouse, this Ashtavakra Muni, he came to visit Janak Maharaj. And Janak Maharaj आए, तो जनक महाराज ने अष्टवक्र को पूछा, ओ साधु, प्लीज एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज माया. ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा कि माया क्या होता है. तो अष्टवक्र मुनि गए, वहां पे एक ऐसा पिलर था, उन्होंने से पिलर को ऐसे आलिंगन कर लिया, टाइटली आलिंगन कर लिया. ही एम्ब्रेस दैट पिलर एंड छोड़ो मुझे, लीव मी, लीव मी. तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, अरे तुमने वो पिलर को पकड़ के रखा है टाइटली और तुम बोल रहे हो लीव मी, लीव मी. एंड देन इट स्ट्रक देम दैट दिस इज व्हाट इट इज. वी थिंक माया इज होल्डिंग अस, एक्चुअली वी आर ओनली होल्डिंग ऑन. We are holding on to our designations. We are holding on to this so-called external beautiful body. We are holding on to our degrees. We are so proud of our degrees. We are holding on to our, so many things we are holding on to. If you let go, Maya loses its influence. So it's very tough to let go. That's why Krishna says that Daivesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya मामेव ही प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति. कहते हैं कि this Maya is very very difficult. She's my energy. She's Krishna's energy. It's very very difficult to leave. Very difficult to overcome Maya. Maya metam tarantite. Why? If you but mam eva hi prapadyante. If you surrender to me, Maya metam tarantite. You are able to cross over Maya very easily. So time will not influence you, Maya will not influence you, karma will not influence you. So there are 5 topics discussed in Bhagavad Gita: Ishvara, Jiva, Prakriti, Kala, Karma. 5 topics है. So ये पूरा इंटरप्ले किस चीज का है? One is Ishvara, Supreme Lord Krishna. Second is Jiva, which is all of us. Third is Prakriti, material nature, Maya, material nature and Prakriti. Fourth is Kala, time. Fifth is Karma. So प्रकृति काल कर्म के चक्कर में जीव फंसा हुआ है and he has turned his face away from the supreme lord. हम लोग भगवान से विमुख हो गए, लेकिन भगवान की तरफ विमुख से हम लोग भगवान की तरफ देखने लगे, तो ये प्रकृति काल कर्म ये सब पीछे हट जाता है. It does not affect you anymore. So the secret is to surrender to the supreme lord in this lifetime. ये मत पोस्टपोन करो कि बाद में करेंगे. अभी आज इसी वक्त if we surrender, then yes, time has no influence on the eternal soul. Right? Correct. Anybody else? Any other questions or comments? Anybody? All right. So let us have kirtan for some time. What is moha? यही है. It is the effect of Maya. Moha is the attachment that comes because of the illusory nature of Maya. Attachment to what? Body. Attachment to what? Education. Attachment to what? To wealth. Attachment to what? My position in society. Attachment to family members. Attachment to house. Attachment to Prabhupada speaks. People think that these are permanent. My family, my house, my land is permanent, and they are attached to these things, not knowing they will all be taken away by influence of time. That is attachment is attachment to temporary and illusory things. That is sammoha is what happens when, जैसे भगवद गीता में कहा है कि क्रोधात् भवति सम्मोहात्, that you become bewildered because of anger. Sammohat means you become bewildered. Bewildered means what? कि आपको एक्चुअली पता होना चाहिए. It is like आपको मालूम है कि ये पॉलिटिशियन चोर है, लेकिन अभी इलेक्शन के टाइम में आप उसी को वोट देते हो बिकॉज और कोई है ही नहीं. चलो इसको, that is called bewilderment. You are bewildered by that moment and you take some decision. That is sammoha.
Hare Krishna. So let us have Kirtan for some time. Hare.